हेलो लर्नर्स, आप सभी का स्वागत है यूपीएससी डायमंड क्लासेस में। उम्मीद करती हूँ आप लोग की तैयारी अच्छी चल रही होगी। इसके पहले के सेशन में हम लोगों ने 2000 से लेकर के 2006 तक के प्राचीन इतिहास के यूपीएससी में पूछे गए सवालों को कर लिया था। आज के क्लास में हम 2006 से लेकर के 2017 तक के यूपीएससी में पूछे जाने वाले सवालों को करेंगे। अगर आपको हमारा ये सेशन हेल्पफुल लगा हो तो शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। इससे हमें मोटिवेशन मिलती है अगली वीडियो बनाने के लिए। लेट्स स्टार्ट द सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन इज़, आप अपने आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज़, विथ रेफरेंस टू द इन्वेडर इन एंसाइंट इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तीन शासकों में से क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सजाना है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ग्रीक्स, साका, कुषाण। पहले ग्रीक आए, फिर शाकाज आए, फिर कुषाण आए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द इक्वाकू रूलर ऑफ साउदर्न इंडिया वेयर एंटागोनिस्ट टूवर्ड बुद्धिज्म। ऑप्शन 2, द पाला रूलर ऑफ ईस्टर्न इंडिया वेयर पैट्रोन ऑफ बुद्धिज्म। विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव इज आर करेक्ट। इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 3, द इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग। अशोक पिलर इंस्क्रिप्शन किससे रिलेटेड था। ऑप्शन नंबर डी, समुद्रगुप्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डज बुद्धियान थ्योरम बौद्धियान सुलवा सूत्रास related to। correct answer is option number A, length of side of a right angle triangle। next question number 5, अनेकत्ववाद is a core theory and philosophy of which one of the following। buddhism, jainism, sikhism, vaishnavism। correct answer is option number B, jainism। next question number 6, theory, there are only two known examples of cave painting of Gupta period in ancient India. One of these is painting of Ajanta cave. Where is the other surviving example of Gupta painting? Correct answer is option number A, Bagh cave। option number A, Bagh cave। next 7 number question, India mentioned its early cultural contact and trade link with Southeast Asia across the Bay of Bengal. For this pre-eminence of early maritime history of Bay of Bengal, which of the following could be the most convincing explanation and explanations। ये यूपीएससी के 2011 में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। मॉनसून विंड अक्रॉस द बे ऑफ बंगाल फैसिलिटेट सी वोएग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, जो यूपीएससी के 2011 में क्वेश्चन पूछे गए हैं। आप सभी क्वेश्चंस के आंसर कमेंट बॉक्स में दे के फिर देखें कि आपके कितने करेक्ट ऑप्शन हैं। अगर आप मैक्सिमम आंसर दे पा रहे हैं तो आपकी यूपीएससी तैयारी अच्छी है और उसी डायरेक्शन में तैयारी करें। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, द जैन फिलोसफी होल्ड दैट द वर्ल्ड इज क्रिएटेड एंड मेंटेन्ड बाई। करेक्ट आंसर इज ए।
Correct answer A. Universal law. Next question 9. Regarding the Indus Valley civilization, consider the following statement. Number 1. It was predominantly a secular civilization and the religious element, though present, did not dominate the scene. 2. During this period, cotton was used for manufacturing textile in India. Correct answer is option number C. Both. Both statements are correct. Next question. Question number 10. The Dharma and Rita depict a central idea of ancient Vedic civilization of India. In this context, consider the following statement. Number 1. Dharma was a conception of obligation and of the discharge of one's duties to oneself and to others. Second, Rit was the fundamental moral law governing the functioning of the universe and all is contained. Correct answer is option number C. Both statements are correct. Next question is 11 number. With reference to the scientific progress of ancient India, which of the statements given below are correct? Correct answer is option number C. 1, 3, 4. इसमें नंबर 2 गलत है, बाकी 1, 3, 4 ऑप्शंस करेक्ट है. ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर ऑफ 11 number question. Next question. With reference to the history of ancient India, which of the following were common to both Buddhism and Jainism? Correct answer is option number B. 2 and 3. In difference to the authority of Vedas, denial of efficacy of ritual. ये दोनों में ही कॉमन था, बट अवॉइडिंग ऑफ एक्सट्रीमीज ऑफ पीनेंस एंड एन्जॉयमेंट. जैनिज़्म में एक्सट्रीमिटी था, बुद्धिज़्म में एक्सट्रीमिटी नहीं थी, इसलिए ऑप्शन 1 गलत हो जाता है, 2 और 3 सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी होगा करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. द नागराज, द्रविडास एंड वेसरास आर द. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी. 3 मेन स्टाइल ऑफ इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर. ये इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर्स के नाम हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14. लॉर्ड बुद्धा's image is sometimes shown with the hand gesture called भूमि स्पर्श मुद्रा. It symbolize. तो ये किस चीज़ का सिंबल है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी. Buddha calling of earth to witness his purity and chastity. Sorry for pronunciation. Chastity despite the temptation of Mara. Next question number 15. The religion of early Vedic Aryan was primarily of. Correct answer is worship and nature. Correct option C, worship of nature and yagna. Next 16. With reference to the guild Sreni of ancient India, that played a very important role in the country's economy, which of the following statement is correct? Correct statement is guild Sreni is correct. Option is C. Correct option is C. 2 and 3 option is correct. Two and 3. The wages, rule of work, standard and price were fixed by the guild. The guild had judicial power over its own member.
Next question 17. Some Buddhist rock cave are called chaityas while the other are called viharas. What is difference between two? Correct answer is B. Chaitya is a place of worship while viraha is the dwelling place of monk. Next question, question number 18. With reference to the history of philosophical thought in India, consider the following statement regarding Sakya school. Correct answer is option B. Sakya hold that it is the self-knowledge that leads to liberation and not any exterior influence or agent. Next question, question number 19. Which one of the following describe best the concept of nirvana in Buddhism? Correct answer is option number A. The extinction of the flame of desire. Next question. Which of the following characterized the people of Indus civilization? Correct answer is B. Option number 2. They worship both male and female deities. Next question 21. Which of the following statement is applicable to Jain doctrine? Correct answer is D. इसमें तीनों ऑप्शन सही है. The sun surest way of annihilation karma is to practice penance. Every object, even the smallest particle, has a soul. Karma is the bane of the soul and must be ended. एंसाइन हिस्ट्री में जैनिज़्म, बुद्धिज़्म, ये सब बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है. इनमें से बहुत सारे क्वेश्चंस हर साल पूछे जाते हैं, तो हर एक यूपीएससी एस्पिरेंट को इस टॉपिक को अच्छे से प्रिपेयर करके जाना चाहिए प्रीलिम्स एग्ज़ाम में. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22. विथ रेफरेंस टू द हिस्ट्री ऑफ इंडियन रॉक कट आर्किटेक्चर कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. करेक्ट आंसर इज option number C. At Ellora cave were made for different faith. Because option number A cave at Badami are the oldest survivor rock cut cave in India. Oldest rock cut cave is Barabar rock cut, not a Badami cave. Next question 23. The Chinese traveler Yuan Chuang Wen Tisang, who visited India, recorded the general condition of and culture of India at that time. In this context, which of the following statement is correct? Correct option is option number B. Option number B. 2 and 3 are correct. As regards punishment for offense ordeals by fire, water and poison were the instrument for determining the innocence or guilt of a person. The 3 number, the tradesmen had to pay duties at ferries and berries station. Option 1 is also wrong. The road and river route were completely immune from robbery. इसमें अगर हम वन ऑप्शन को एलिमिनेट कर देते तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर बी ऐसे ही आ जाता. अगर हम वन ऑप्शन को एलिमिनेट करते तो ऑप्शन नंबर बी. करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी. नेक्स्ट 24. In the context of cultural history of India, a pose in dance and dramatic called Tribhang has been a favorite of Indian artists from ancient time till today. Which one of the following statement best describe this pose? Correct answer is option number A. One leg is bent and the body is slightly but oppositely curved at waist and neck. Next question. Consider the following historical place: Ajanta Cave, Sanchi Stupa, Lipakshi Temple. Which of the above places are also known for mural painting? Correct answer is
Correct answer is option number B. Ajanta Cave and Lipakshi Temple. Next question number 26. With reference to the Indian history of art and culture, consider the following pair. Famous work of sculpture site. Correct answer is option number C. 1 and 3 are correctly matched. 1 number, a grand image of Buddha's Mahaparinirvanas with numerous celestial musicians above and the sorrowful figure of his followers below. अजंता केव में है ये पेंटिंग. नेक्स्ट 3 number, Arjuna's penance, descent of Gangas, sculpted on the surface of huge boulder, Mamlapuram. Correct answer is option number C. Next question 27. With reference to Buddhist history, tradition and culture in India, consider the following pair. Correct answer is option number C. 1 and 3. स्पीति वैली में तैबू मोनास्ट्री एंड टेम्पल कॉम्प्लेक्स, लद्दाख आलची टेम्पल कॉम्प्लेक्स. नेक्स्ट क्वेश्चन 28. Which one of the following pair does not form part of the sixth system of Indian philosophy? Correct answer is option number C. Lokayat and Kapalika. Indian sixth system of Indian philosophy are Mimamsa, Vedanta, Nyaya and Vaiseshika, Sakya and Yoga. Next question. The national motto of India, Syam Satyameva Jayate, inscribed below the emblem of Indian, is taken from. D number, Mandak Upanishad. D number, Mandak Upanishad. Satyameva Jayate. National motto taken from Mundak Upanishad. Next 30 number question. Which of the following kingdom were associated with the life of Buddha? Correct answer is option number C. Correct answer option number C. कोशला मगध. कोशला में बुद्धास बॉर्न, मगध में बुद्धास डाई. कोशला में बुद्धा जी का जन्म हुआ था, मगध में बुद्धा जी का डेथ हुआ था. बुद्धिज़्म से, जैनिज़्म से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं. इस टॉपिक को आप याद करके जाएं. नेक्स्ट क्वेश्चन विथ 31. With reference to the art and archaeological history of India, which one of the following was made earliest? Correct answer is B. Rock cut Elephanta at Dhauli. Next question. Which one of the following books of ancient India has the love story of the son of the founder of Sunga dynasty? Correct answer is Malvi Kagni Mitra. Question. With reference to the religious history of India, consider the following statement. Correct answer is option number 2. Saraswati Vadini held that the constituent of phenomena were not wholly momentary but existed forever in latent form. ऑप्शन नंबर 1 इसलिए गलत है क्योंकि सौतांत्रिका एंड सौमित्या वेयर द सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म नॉट जैनिज्म. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पेंटिंग ऑफ Bodhisattva Padmapani is one of the most famous and of illustrated painting at
Correct answer is option number A. Thank you learners for watching. प्लीज़ शेयर सब्सक्राइब एंड लाइक द चैनल। अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू।